हेलो ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स आज मु किछि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रे क्वेश्चन नै कि आछि कारण एबे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जदि आमे देखिबा सेथिरु इजी टू मॉडरेट लेवल थिला आउ एथरर वैकेंसी अनुसार मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिके जिबा जरूरी कारण क्वेश्चन को भी टॉपिक रु को भी सब्जेक्ट रु भी आसी पारे कट ऑफ भी पारे मार्क कट ऑफ मार्क भी क्रॉस करिवार अछि सेथिपई आउ घर पाख पई जते बेसी मार्क सिक्योर कले निज घर पाखरे पोस्टिंग हबा सेथिपई सबु टॉपिक रु इंपोर्टेंट टॉपिक रु हमको क्वेश्चन कवर करके जिबाकू पड़िबो सेथिपई चलंतु जिबा फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी fever, headache and knuckle rigidity are classic symptoms seen in which disease? जो ऑप्शन रे जो गुडा अच्छी पार्किंसंस डिजीज, मेनिंगोमाइलोसिल, अल्जीमर्स डिजीज, मेनिंजाइटिस ए चारटा ऑप्शन रु सिम्पटम्स अच्छी फीवर, हेडेक आउ नक्कल रिजिडिटी एटा कोथरे आमे देखिबा को पाइबा नर्सिंग वीडियोस। हाँ आंसर नहीं, आंसर ए हबनी, आंसर हब डी मेनिंजाइटिस। आंसर हब डी मेनिंजाइटिस हब आंसर काहे कि हब मेनिंजाइटिस रो सिम्पटम्स रहइबो मेनिंजाइटिस होची हमरो इन्फेक्शन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस जो हमरो रहउची मेनिंजेस रा हमरो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जदी होची ताको मेनिंजाइटिस हमें कहउचे। सेटा वायरल भी हे पारे बैक्टीरियल भी हे पारे। मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया द्वारा हे थाए किंतु जदी टीबी मेनिंजाइटिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा टीबी मेनिंजाइटिस भी हुए। बैक्टीरियल वायरल किछि भी इन्फेक्शन कारणरू मेनिंजाइटिस हे पारे। मेनिंजाइटिस रो सिम्पटम्स कोन कोन रहइबो फीवर रहइबो, स्लीपीनेस रहइबो, हेडेक, लाइट सेंसिटिविटी, वोमिटिंग, जॉइंट्स पेन, रैश आउ सीजर रहइबो। किंतु फीवर, हेडेक आउ नक्कल रिजिडिटी होची तारो मेन माने सिम्पटम्स आमे जो सिम्पटम्स देखि कि डाउट करिबा सस्पेक्ट करिबा जे मेनिंजाइटिस अछि बोली। तापरे दीटा साइन देखा हुए कर्निग साइन आउ ब्रुजिंस्की साइन। जो साइन टेस्ट करिकी डॉक्टर माने फिजिकल असेसमेंट बेले जो साइन रु मेनिंजाइटिस बोली कंफर्म करंती। एथिरे नी को कोन करा जाए 90 डिग्री फ्लेक्स करा जाए, हिप को भी हिप को नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करा जाए। जदि नी को एक्सटेंड कला परे नी को एठी एक्सटेंड करा होची नी को एक्सटेंड करला करे पेशेंट पेन फील करिवो। पेन इन एक्सटेंशन ऑफ नी सेटा होची कर्निग साइन। आउ ब्रुजिंस्की रे कोन हुए ब्रुजिंस्की रे जेतेबेले जेतेबेले पाद पेशेंट रो गोड़ को एमती फ्लेक्स कले हिप आउ नी फ्लेक्स हिप आउ नी को एठी फ्लेक्स कला परे तारो नेक ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हे जाउची। एठी नेक टा ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हे जाउची। फ्लेक्शन ऑफ नेक ए दीटा साइन पके कि क्वेश्चन आसी पारे जे मेनिंजाइटिस रो को साइन माने ए साइन गुडा को डिजीज रे पाइबा नॉन इमेज बेस्ड दे कि पचारि दबो जे एटा को साइन बोली। हाँ रश्मिता गुड आफ्टरनून। वामिका गुड इवनिंग। तापर आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिबा। क्लासिक ट्रायड होची फीवर, हेडेक, नक्कल रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी। नक्कल माने नेक रिजिडिटी एटा। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज जोटा कहली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होची मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज। किंतु मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जदि रहउची क्वेश्चन रे जदि देइची मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस रो कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज कोन रहइबो सेतेबेले नेजेरिया मेनिंजिटाइटिस हबो आंसर।
may present with pitachial rash सेतबेले meningococcal meningitis रो साइन रे pitachial rash थिबो पिटाची थिबो डायग्नोस्टिक टेस्ट सब बेले गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होची लुम्बर पंक्चर आमे जेतेबेले स्टडी करिबा डायग्नोस्टिक लैब स्टडी तो एलपी करिकी सेथिरु सीएसएफ एनालिसिस करिबा सीएसएस रे न्यूट्रोफिल अधिक रहइबो प्रोटीन अधिक रहइबो आ ग्लूकोज कम रहइबो कर्निक साइन ब्रूडिंग साइन कहिली नर्सिंग प्रायोरिटी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन आमे नबा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखिबा पेशेंट कंफ्यूजन को जाई पारे जेहेतु सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड अछि आउटर लेयर इन्फेक्टेड अछि सेति न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखिबा आईवी एंटीबायोटिक्स दबा जेहेतु बैक्टीरियल बा वायरल इन्फेक्शन हेछि सेति आईवी एंटीबायोटिक्स दिया जिवो एंटीबायोटिक्स जदि भाइराल बोली सस्पेक्ट करा होछि ताले एंटीवायरल ड्रग आ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कले एंटीबायोटिक स्टार्ट करबा पूर्वरु कल्चर पठा जिवो सीएसएफ ड्रग एलपी करिकी सीएसएफ नेकी ताको कल्चर पई पठा जिवो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन रो मेडुला पॉन्स सेरेबेलम आउ थैलामस अछि ता भितरु रेस्पिरेटरी सेंटर कोठी अछि ए चारटा भितरु रेस्पिरेटरी सेंटर कोठी अछि आंसर कोन हबो उबेद yes उबेद आंसर करेक्ट दैट इज मेडुला को हमर रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाए मेडुला अछि पॉन्स तापरे मेडुला स्पाइनल कॉर्ड मेडुला को रेस्पिरेटरी सेंटर कहा होची मेडुला रो जो हमर एक्सपिरेशन आउ इंस्पिरेशन करूछु ब्रीदिंग पाई मेडुला रो फंक्शन रहिची मेडुला ऑब्लोंगाटा primarily driven by the respiratory function amar inspiration आउ expiration breathing pattern जो चलीची primarily medulla oblongata द्वारा function होची तार रेगुलेशन पाई पॉन्स रो रोल रहिची किंतु रेस्पिरेटरी सेंटर होची मेडुला पॉन्स कौन करुची न्यूमोटैक्सिक आउ अपन्यूस्टिक सेंटर करुची व्हिच रेगुलेट रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग जदि क्वेश्चन रे पचारिची रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन पाई किए रेस्पोंसिबल सेते बेले हबो पॉन्स किंतु रेस्पिरेटरी सेंटर माने एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन ब्रीदिंग आउ ब्रीदिंग पाई मेडुला ऑब्लोंगाटा रेस्पोंसिबल आउ रेट आउ डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन पाई पॉन्स रेस्पोंसिबल अंकुर हाँ अंकुर गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सोनाली chemical trigger medulla is highly sensitive to changes in carbon dioxide and pH level in the blood and cerebrospinal fluid inspiration expiration dorsal respiratory group in the medulla drives inspiration आउ ventral जो मेडुला ऑब्लोंगाटा रे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अछि जे इंस्पिरेशन पाई रेस्पोंसिबल आउ एठी देइनी इमेज रे मेंशन नाही मेडुला रे एठी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जे इंस्पिरेशन पाई रेस्पोंसिबल मेडुला रे आउ एठी भीतर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जता रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होची बा ब्रीदिंग
फोर्स्ड एक्सपिरेशन करूचे फोर्स्ड एक्सपिरेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ए टाइम रो ब्रीदिंग पाई वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला रो रेस्पोंसिबल रहउची रोल अछि तार आउ पॉन्स रो काम होची मेंटेन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एथिरो मेनली दीटा क्वेश्चन आसी पारे रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन किए कहार रोल रहउची पॉन्स रो आउ रेस्पिरेटरी सेंटर कहा को कुहा जाउची सेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा आउ सेरेबेलम ऑप्शन अनुसार सेरेबेलम रो फंक्शन होची बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केजर फ्लिसर बा गोल्डन ब्राउन रिंग एट द लिम्बस ऑफ द कर्निया सीन विथ ए हैंड लेंस इज ऑब्जर्व्ड इन को डिजीज रे आखि रे केजर फ्लिसर इन देखा हुए यार अन्य नाम कौन अन्य ना होची अदर नेम सनफ्लावर उबेथ हाँ विल्सन्स डिजीज हबो सनफ्लावर कैटरैक्ट सनफ्लावर कैटरैक्ट भी कुहा होची ताको केजर फ्लिसर रिंग गोल्डन माने आई रो साइट रे गोल्डन ब्राउन कलर रो रिंग हे जिवो कौन पाई हबो ना कॉपर डिपोजिट हेकी कॉपर डिपोजिट जेते बरे आखिरे कॉपर डिपोजिट हेकी ये सुबेद सनफ्लावर कैटरैक्ट ओ इथरे इमेज देइनी गोल्डन ब्राउन रिंग हमर गोटे एटा गोटे ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो थिरे एटीपी 7B जीन म्यूटेटेड बा जीन म्यूटेशन थाए एटीपी 7B जीन म्यूटेशन थाए सेते बेले कोन हुए सेरुलोप्लाज्मिन बोली गोटे ग्लाइकोप्रोटीन जे कॉपर को बाइंड करिकी लिवर रु माने लिवर रे तो मेटाबॉलिज्म होची सेरुलोप्लाज्मिन ग्लाइकोप्रोटीन को सिंथेसिस को कम कर दिए तो सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कमी गले सेरुलोप्लाज्मिन रो लेवल कमी गला से कौन कला ना बाइंड करके कॉपर एक्सक्रीशन करेलानी कॉपर बढ़ी गला लिवर रे कॉपर डिपोजिट हेकी रहला लिवर रे कॉपर डिपोजिट रहला तो ब्लड सेरम रे भी कॉपर बढ़ी गला कॉपर रो मात्रा देह रे बढ़िला मेनली आउ सेटा आखि रे भी जाके डिपोजिट हे गला जोटा कि कर्नियल साइड रे गोल्डन ब्राउन कलर रिंग कला ताको सनफ्लावर कैटरैक्ट कहूचे आउ केजर फ्लिसर रिंग बोली कहूचे अंक्युर where are you from ma'am I am from Odisha hepatolenticular degeneration yes hepatolenticular degeneration हुए इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम रे जो गोडा आसी पारे विल्सन्स डिजीज ताको कहा जाए हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन जोटा हम कहली इनहेरिटेंस होची ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एटा एटीपी 7B जीन म्यूटेशन हैला सेरुलोप्लाज्मिल कमिला मेटल एक्युमुलेट हैला कॉपर एक्युमुलेट हे गला बॉडी रे लिवर रे सेरम कॉपर लेवल चेक कले भी बढ़ी जिवो साइट ऑफ केएफ रिंग डिसिमेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कर्निया रो डिसिमेट्स मेम्ब्रेन रे माने आउटर कवरिंग ता जो तारो ता भीतर मेम्ब्रेन टारे गोल्डन ब्राउन कलर रो रिंग फॉर्मेशन हबो बेस्ट स्लिट लैंप एग्जामिनेशन रे देखा जिवो रिंग ता कॉमन ऑर्गन्स होची लिवर ब्रेन रो बासाल गांग्लिया रे भी कॉपर डिपोजिट हे जाय थाए जोटा कि पेशेंट रो मेंटल स्टेटस ऊपर भी अफेक्ट कर थाए आउ पेशेंट कंफ्यूजन इरिटेबिलिटी
बेले बेले जीसीएस भी डाउन हो जाए थाए कर्निया किडनी रे डिपोजिट हुए ट्रीटमेंट होची तार पेनिसिलामाइन ट्राइएंटाइन जिंक थेरापी लो कॉपर डाइट सजेस्ट करा हुए पेशेंट को तो एटा गोटे मॉडरेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थिला हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एटा सिम्पटम्स गुडाक अछि लिवर रे एक्युमुलेट होई थाए तो सिम्पटम्स रे एब्डोमिनल पेन रहइबो डार्क यूरिन लाइट स्टूल कलर लाइट हे जिवो जॉन्डिस भी हे जाए जॉन्डिस भी देखा दे पारे ब्रेन जेहेतु बासाल गांग्लिया को अफेक्ट करछि बासाल गांग्लिया रे डिपोजिट हे जाउछि कॉपर ସେଥିପାଇଁ मूड चेंज रहइबो एंजाइटी डिप्रेशन हबो डिस्टर्ब थॉट फीलिंग रहइबो आउ अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी रहइबो रिंग्स अराउंड द एज ऑफ योर कर्निया ए एज जोटा कहली कर्नियल एज रे गोल्डन ब्राउन रिंग ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ सनफ्लावर कैटरेक्ट बोली कुहा होची नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कले ट्रेमर स्टिफ मसल प्रॉब्लम्स विथ कोऑर्डिनेशन रहइबो हाँ चिलेटिंग एजेंट होची अमोनियम टेट्राथायो मॉलिब्ड तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विथ कुसोमल्स ब्रीदिंग फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छी 420 कुसोमल्स ब्रीदिंग अच्छी फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर अच्छी फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर काहे की हुए फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर काहे की हुए फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर हुए एसीटोन जदि बढ़ी जाए ताले फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर ब्रीथ रो माने ब्रीथ रो स्मेल टा फ्रूटी स्मेल हुए द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट कोन हबो एटा क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टा कोन क्लिनिकल मैनेजमेंट कोन हबो फास्ट हमें सिम्पटम्स आउ जति की वैल्यू देइचे पीएच अछि 7.12 पीएच रु हमें जानुचे 7.12 अछि कुसम फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर अछि माने एसीटोन अछि माने एसिडिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हेलानी एसीटोन रो ब्रीथ ऑर्डर अछि एसीटोन एक्युमुलेशन होची हाँ सोनाली उबेद आंसर बी हबो आईवी नॉर्मल सलाइन फॉलोड बाय फास्ट होची फ्लूइड जदी दीटा भी ऑप्शन रे थांता नॉर्मल सलाइन गोटे ऑप्शन रे थांता और इंसुलिन आउ गोटे ऑप्शन रे थांता ताले फास्ट मैनेजमेंट होची फ्लूइड दबा परे फॉलोड बाय इंसुलिन थेरापी आईवी इंसुलिन तो एतिकी सब जो सिम्पटम्स देखैची एटा कहारो सिम्पटम्स डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हेची डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आईवी नॉर्मल सलाइन होची फॉलोड बाय इंसुलिन इन्फ्यूजन होची आंसर डीके ट्रीटमेंट ऑर्डर रे फास्ट हमें फ्लूइड दबा तापरे इंसुलिन जेहेतु दउचे इंसुलिन दबारु इंसुलिन कौन कॉज करूची पोटासियम कमे दउची सेथिबाई पोटासियम सेथिबाई हमें कौन करिबा केसीएल को डाइल्यूट करिकी इन्फ्यूजन स्टार्ट करिबा potassium must be monitored closely because insulin drives potassium into cell insulin extracellular potassium को सेल भीतर को इंट्रासेलुलर को पठै दिए तो सेथि पई पोटासियम कमी गले ईसीजी चेंजेस आसीबो पेशेंट रो फ्रीक्वेंटली मॉनिटर इंसुलिन थेरापी जदि चलचे फ्रीक्वेंटली पोटासियम मॉनिटर करबा डीके काहे की हुए डीके होची काहे डीके रो रीजन कोन एटी क्वेश्चन अनुसार पेशेंट रो सुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 420 अच्छी जेतेबेले हमर इंसुलिन प्रोडक्शन कमी जाए डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन हुए
इन्सुलिन प्रोडक्शन कमी गला गोटे टाइप 2 डायबिटिक हो बा टाइप 1 डायबिटिक हो इन्सुलिन प्रोडक्शन नाही टाइप 1 डायबिटिक हेले तो इन्सुलिन प्रोडक्शन नाही तांकर बहुत ही कम बा नाही इन्सुलिन प्रोडक्शन कमी आउ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी बढ़ी चलची लिभर रे माने लिभर इन्सुलिन रो प्रोडक्शन जदि ठीक थांता ताले ब्लड ग्लूकोज बढ़ी बढ़ी जाई न थांता ना इन्सुलिन प्रोडक्शन ठीक थिले ब्लड ग्लूकोज बढ़ी न थांता इन्सुलिन प्रोडक्शन कमीची आ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी बढ़ी गला तो बॉडी कौन भाविला जे ब्लड रे ग्लाइकोलिसिस होउनी आ ब्लड रे माने पेशेंट फास्टिंग रे अछि बा थ्राइव अछि सेति पय से कोन करबो लिवर रे थिबा फैट ब्रेक डाउन करबो लिवर कोन करबो फैट ब्रेक डाउन करबो जोटा को कहा जाए लाइपोलाइसिस कले फैट ब्रेक डाउन कले कीटोन बॉडी प्रोड्यूस हबो आ कीटोन बॉडी ब्लड स्ट्रीम को जीवो ब्लड रे एक्युमुलेट हबो ब्लड रे कीटोन बॉडी एक्युमुलेट हेले यूरिन कीटोन पॉजिटिव आसीबो ब्लड रो कीटोन बॉडी भी पॉजिटिव आसीबो तो कीटोएसिडोसिस हे जीवो पेशेंट को कीटोएसिडोसिस लाइफ थ्रेटनिंग ए सिचुएशन रे हमें कीटोन बॉडी को एक्सक्रीट करेबा पई आईवी नॉर्मल सलाइन एडिक्वेट फ्लूइड सप्लाई दरकार पेशेंट को आईवी नॉर्मल सलाइन फॉलोड बाय इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करबा पई और इंसुलिन जेतु ब्लड रे गले इंट्रासेलुलर को से पठै दबा पोटेशियम को सेति पई हमकु पोटेशियम सप्लीमेंटेशन बा पोटेशियम बढ़ेबा पई इन्फ्यूजन कैसियल डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन स्टार्ट करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा a patient with suspected pulmonary tuberculosis should be placed under which type of isolation contact precaution टीबी पेशेंट को टच करले टीबी हबो सेमती तो नुह ना ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एयरबोर्न प्रिकॉशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन हबो आंसर एयरबोर्न टीबी होची गोटे एयरबोर्न डिजीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस गोटे एयरबोर्न डिजीज तो आमे को प्रिकॉशन नबा एयरबोर्न प्रिकॉशन मोइटी प्रिकॉशंस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पाई पीपी हमर केवल ग्लोव्स हैंड वाशिंग जोटा सब हॉस्पिटल सबु पेशेंट को पाई हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नौ ग्लोव्स आउ हैंड वाशिंग हैंड रबिंग एचआईवी हेपाटाइटिस बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हैंड हाइजीन जाउची स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रे आ एयरबोर्न प्रिकॉशन रे पीपी जाउची N95 मास्क नेगेटिव प्रेशर रूम रो माने बाहर रो एयर भीतर को आसी परिबो किंतु भीतर रूम भीतर रो एयर बाहर को जाई परिबनी नेगेटिव प्रेशर रूम दिया जाए टीबी पेशेंट को N95 मास्क दिया जाए टीबी वारिसेला पर्टुसिस मिजिल्स पेशेंट मानन को एयरबोर्न प्रिकॉशन रे रखा जाए
ଆଉ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଗାଉନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଯେମିତିକି ଫ୍ଲୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ମମ୍ସ ପର୍ଟ୍ୟୁସିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଏ ମାସ୍କ ଗାଉନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିପି ଦରକାର ହୁଏ ट्रांसपोर्ट मिनिमाइज ट्रांसपोर्ट आ कांटेक्ट प्रिकॉशन जोटा टच कले हो जाए जो गुड़ाक कि एमआरएसए क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल आरएसवी डिसइनफेक्ट रूम उबेद आंसर एटार सी ड्रॉपलेट नुह टीबी एयरबर्न प्रिकॉशंस रे जाउची N95 रेस्पिरेटर एंड नेगेटिव प्रेशर रूम होची एयरबर्न प्रिकॉशन रे हमें प्रिकॉशनरी मेजर जहा नउचे सेटा होची N95 मास्क आउ नेगेटिव प्रेशर रूम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज मोर सजेस्टिव ऑफ ए गैस्ट्रिक अल्सर देन ए डिओडेनल अल्सर पेन माने ये ऑप्शन भितर को ऑप्शन टा गैस्ट्रिक अल्सर को सजेस्ट करछि पेन रिलीफ बाय फूड इंक्रीज बॉडी वेट पेन aggravated by meals with weight loss और hyperchlorhydria पेन रिलीफ बाय फूड कोथरे हुए पेन aggravated हाँ उबेद आंसर ठीक अच्छी पेन aggravated by meals with weight loss गैस्ट्रिक अल्सर रे फूड आसिला फूड आसिकी पेट जतबेले एम्प्टी रहिथिबो सेतबेले गैस्ट्रिक अल्सर रे पेन हुए नाही किंतु इमिडिएटली फूड नेला परे फूड जतबेले पहुंचे गैस्ट्रिक अल्सर हेतिले पेन बढ़ी जाए मील्स पेन एग्रावेटेड बाय मील्स विथ वेट लॉस भी हवा स्टार्ट हुए कारण फूड एब्जॉर्प्शन ठीक रे होनी ना गैस्ट्रिक अल्सर अच्छी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तार फंक्शन ठीक रे करि पारुनी आ डिओडेनाल अल्सर रे मील अच्छी खाइबा परे पेन कमी जाए आ खाइबार 2-3 घंटा परे जेतेबेले खाइबा डाइजेशन है कि पळेला स्मॉल इंटेस्टाइन को सेतेबेले पेन हवा स्टार्ट हबो मील रो 2 to 3 आवर्स परे एम्प्टी स्टमक रे पेन हवा स्टार्ट हबो पेन रिलीफ बाय फूड खाइबा परे एटा होची डिओडेनाल अल्सर रे हुए आ पेन एग्रावेटेड बाय मील्स विथ वेट लॉस गैस्ट्रिक अल्सर रे हुए अल्सर ऊपर क्वेश्चन आसे पेप्टिक अल्सर रु मोस्ट कॉमन अल्सर होची डिओडेनाल अल्सर होची मोस्ट कॉमन अप्रोक्सीमेटली 80% गैस्ट्रिक अल्सर लेस कॉमन approximately 20% तो
हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट्स आम कि देखा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिओडेनाल अल्सर होची एच पाइलोरी। एच पाइलोरी ट्रिपल किट दिया जाए एच पाइलोरी रे क्लारिथ्रोमाइसिन आमोक्सिसिलिन आउ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आउ जदि ट्रिपल किट रे कमु नाही ताहले क्वाड्रुपल दिया जाए बिस्मथ से ऐड करा जाए एच पाइलोरी जदि पॉजिटिव आसुची डिओडेनाल अल्सर जदि पॉजिटिव रहिला तारे क्लारिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन आउ पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आउ जदि सेथिरे भी काम न कला सेटा फेल्युअर हैला ताहले ऐड करा जिवो बिस्मथ एटा दिया जाए 14 डेज 14 डेज ट्रीटमेंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर होची एनएसएआइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जदि फ्रिक्वेंटली जणे नौची ताले तार गैस्ट्रिक अल्सर हबार चांसेस अछि। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेप्टिक अल्सर डिजीज रे कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रिक अल्सर हो कि डिओडेनाल अल्सर हो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहइबा अपर जीआई ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ रहइबा परफोरेशन अल्सर रही रही परफोरेशन हे गले डेथ कॉम्प्लिकेशन होची तार डेथ हे जिवो। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होची अपर जीआई एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी रे जणा पड़ी जिवो इन्फेक्शन माने एच पाइलोरी इन्फेक्शन द्वारा हेची कि अल्सर एमती पेप्टिक अल्सर अच्छी एच पाइलोरी नेगेटिव अच्छी और एनएसएआईडी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर हेची। बायोप्सी भी करा हुए कार्सिनोमा डिटेक्शन पाई बा मैलिग्नेंसी गैस्ट्रिक अल्सर मैलिग्नेंट अच्छी कि नहीं बायोप्सी भी करा जाए सेतिरु। और ड्रग कॉजिंग पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमनली को एनएसएआईडी ड्रग पेप्टिक अल्सर कॉज करे। PPI before urea breath test should be stopped for at least 2 weeks to avoid false negative result। जदि आपण ए पेप्टिक अल्सर जन को हेइथिला एच पाइलोरी पॉजिटिव आसु कि न आसु से पीपीआई दिया जाए ताको पीपीआई पॉजिटिव रे भी दिया जाए नेगेटिव रे भी दिया जाए। यूरिया ब्रीथ टेस्ट कले यूरिया ब्रीथ जदि एच पाइलोरी थाए ताले यूरिया ब्रीथ टेस्ट रु सेटा जणा पड़े। आ यूरिया ब्रीथ टेस्ट नॉन इनवासिव एटा नॉन इनवासिव टेस्ट एंडोस्कोपीटा इनवासिव ना एटा नॉन इनवासिव टेस्ट करा हुए एच पाइलोरी रो प्रेजेंस जानिबा पई। पीपीआई जते बळे नौचंती आपण तार 2 वीक्स बंद करिवार 2 वीक्स परे यूरिया ब्रीथ टेस्ट पई गले एक्यूरेट रिजल्ट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा A patient with chronic kidney disease CKD has fatigue and pallor. Which type of anemia is most commonly seen in CKD? Microcytic hypochromic anemia। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कोथरे देखा हुए को एनीमिया माइक्रोसाइटिक हेथाय हाइपोक्रोमिक हेथाय माइक्रोसाइटिक आउ हाइपोक्रोमिक सफिया सफिया हाँ आंसर सी हबो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया सीकेडी केस रे आरबीसी रो वॉल्यूम कि हीमोग्लोबिन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी एगुड़ा अफेक्टेड हे न थाए सेति पई नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखिबा को बेले मु सेटा एक्सप्लेन करिवि। माइक्रोसाइटिक माने होचे आरबीसी रो वॉल्यूम कम थिबो नॉर्मल आरबीसी रो वॉल्यूम 80 to 100 फेंटोलीटर मीन कॉर्पस्कुल वॉल्यूम ताको कुआउची। हाइपोक्रोमिक मीन कॉर्पस्कुल हीमोग्लोबिन
नॉर्मल होची 27 टू 32 पिकोग्राम। जदि एमसीवी एथिरे कौन है थाए, एमसीवी भी कमी जाई थाए 80 रु कमी जाई थाए, आउ एमसीएच मीन कर्पस्कल हिमोग्लोबिन 27 रु कमी जाई थाए। तो सेते बेले ताको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहो। आउ मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया केते बेले, मैक्रोसाइटिक होची जेते बेले एमसीवी बढ़ी जाइथिबो 100 एफएल रु, सेते बेले ताको मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जोटा विटामिन B12 डेफिशिएंसी रे हुए। Here Mustaq ma'am, which language are you talking in? I'm talking in Odia language. This class is for OSSSC Nursing Officer, upcoming OSSSC Nursing Officer exam. किडनी रु आमर गोटे हार्मोन, किडनी रो पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल, किडनी रो पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल रु एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन हुए। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन हुए। से कौन करे, जो आमर प्लूरी बोन रु बोन मैरो, बोन रो जो बोन मैरो रही, बोन मैरो रु आमर प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक सेल अच्छी ना, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक सेल अच्छी, से माने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सीएफई, एटी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, से मेगाकैरियोसाइटिक एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर्स बीएफयू, तापरे सीएफयू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कला, सीएफयू ई सेथिरु कोन होची प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, जहाँ भी हो एरिथ्रोब्लास्ट रो सब स्टेज गला, प्रो बेसोफिलिक आउ लेटर जोटा एरिथ्रोब्लास्ट हैला, एरिथ्रोब्लास्ट रु रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट रु एरिथ्रोसाइट। तो ए फॉर्म एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन पेशेंट रो सीकेडी पेशेंट रो पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल, सीकेडी पेशेंट रो पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करि पारेनी एरिथ्रोपोएटिन। ताहले कौन हबो, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रु आरबीसी प्रोडक्शन कमी जीवो, आरबीसी प्रोडक्शन कमिले
एनीमिया हबो किंतु आरबीसी रो वॉल्यूम आउ हीमोग्लोबिन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन किछि चेंजेस हबनी खाली आरबीसी प्रोडक्शन अफेक्ट हबो जहा द्वारा एनीमिया हबो सेतिमाई नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हुए सीकेडी पेशेंट को डायलिसिस चले वीकली ट्वाइस बा थ्राइस से टाइम रे तांको एरिथ्रोपोएटिन गोटे डार्बापोएटिन बा एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन दिया जाए वीकली ट्वाइस की थ्राइस तार कंडीशन ऊपर किडनी रो साइज आउ किडनी रो फंक्शन नै की डॉक्टर सेटा नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइस करंती वीकली एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन सेटा कॉस्टली भी थाए डार्बापोएटिन बा एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन सबक्यूटानियस नबा को पड़े सबक्यूटानियस रूट रे ट्रीटमेंट यार ट्रीटमेंट सबक्यूटानियस रूट रे एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन एडवाइस हुए तापरे जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए पेशेंट रिसीविंग हैलोपेरिडल डेवलप्स हाई फीवर severe muscle rigidity altered consciousness and autonomic instability which condition should the nurse suspect fast एटी जो सिम्पटम्स गुडाक अछि सिम्पटम्स गुडाक ऑलरेडी ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसीची एटा गोटे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रीवियसली ए क्वेश्चन आसीची ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स रु ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसीथिला कौन हम आंसर गोटे पेशेंट को हैलोपेरिडल दिया होची तार हाई फीवर सीवियर मसल रिजिडिटी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हेलानी आउ ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आसिलानी आंसर कौन हम को कंडीशन है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम तार ट्रायड रे जाउची हाई फीवर रहइबो मसल रिजिडिटी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस रहइबो हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक लाइक हैलोपेरिडल द्वारा ए माने डिजीज डेवलप हुए हाई मेनली हैलोपेरिडल मैक्सिमम ईपीएस हैलोपेरिडल द्वारा ही होता है मैक्सिमम ईपीएस सिम्पटम्स हैलोपेरिडल जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक रोची हैलोपेरिडल रु ही मैक्सिमम ईपीएस देखा को मिले से क्रिएटिनिन लैब टेस्ट क्रिएटिनिन काइनेस कैरेक्टरिस्टिक लैबोरेटरी फाइंडिंग लैबोरेटरी टेस्ट रे इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन काइनेज आसीबो इमीडिएट मैनेजमेंट होची स्टॉप द एंटीसाइकोटिक इमीडिएट मैनेजमेंट प्रायर ऑप्शन रे एमती भी आसी कि पकई पारे एंटीसाइकोटिक फास्ट स्टॉप करबो सपोर्टिव केयर दबो और ट्रीट विथ डांट्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन डांट्रोलिन होची ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईपीएस ब्रोमोक्रिप्टिन भी दिया होची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयुष्मान भारत स्कीम इज करेक्ट इट प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization it provides free treatment only for government employees मान को एटा नाही आयुष्मान भारत it covers only outpatient OPD services आउटपेशेंट ओपीडी सर्विसेज नुह प्लस इनपेशेंट भी दिए तो यही ऑप्शन हबनी इट इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन अर्बन एरियाज प्लस रूरल एरियाज रे भी इम्प्लीमेंटेड आयुष्मान भारत स्कीम भी चलची इंडिया रे मैक्सिमम जगह रे आयुष्मान भारत रे हेल्थ बेनिफिट से स्कीम रे प्राइवेट किछि प्राइवेट सेक्टर रे हो गवर्नमेंट सेक्टर रे हो आयुष्मान भारत स्कीम रे पेशेंट मानकर ट्रीटमेंट चलची कम्युनिटी रो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपडेटेड
तो ए ऑप्शन होची करेक्ट एथिरे 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो बा टर्शियरी सेंटर रे ट्रीटमेंट हो सेति पई 5 लाख पर एनम पेशेंट को माने फैमिली को गोटे 5 लाख पर एनम प्रोवाइड करा होची आयुष्मान भारत विषय आउ किछि पॉइंट्स जानिबा लॉन्च हेची 2018 रे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबी पीएमजेवाई कवरेज होची 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिशियरी होचंती इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिली गवर्नमेंट क्राइटेरिया अनुसार एलिजिबल हेतिबा दरकार ट्रीटमेंट होची सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन प्राइमरी केयर रे आपण प्राइमरी पीएचसी बा सब सेंटर रे फैसिलिटी न थाए आयुष्मान रो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर रे आपण पाइबे हॉस्पिटल होची हॉस्पिटल्स अवेलेबल इन किछटा गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अछि जो गुडा का आयुष्मान भारत स्कीम एक्सेप्ट करूचंती नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होची यार नोडल मिनिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बोनिस टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म पूर्व वर्ष क्वेश्चन रे गोटे स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड रो क्वेश्चन आस्थिला स्कूल माने गोटे टेस्ट दे देथिला या स्टूल फॉर चारटा ऑप्शन देथिला स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड पई को टेस्ट करा हुए तो टेस्ट गुडा को सब देखि कि जिवो बोनिस टेस्ट को स्ट्रेस इनकंटिनेंस न्यूरोजेनिक इनकंटिनेंस ओवरफ्लो इनकंटिनेंस अर्ज इनकंटिनेंस कौन पई करा हुए कौन हम आंसर स्ट्रेस इनकंटिनेंस गोटे कफिंग बा कफिंग स्नीजिंग टाइम रे जदि गोटे पेशेंट रो यूरिन फ्लो पळे आसुची मिक्सचरेशन ऊपर तार कंट्रोल नाही यूरिनरी अर्ज बोनिस टेस्ट होची स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस पई करा जाय ब्लैडर नेक रे नेक आउ यूरोथ्रल हाइपर मोबिलिटी पॉजिटिव टेस्ट केमती हुए लीकेज ऑन कफिंग इज प्रिवेंटेड व्हेन द ब्लैडर नेक इज सपोर्टेड ब्लैडर नेक को सपोर्ट देकी कफिंग आउ स्नीजिंग करबा पई कुहा जिवो आउ सेतेबेले तार इनकंटिनेंस हबनी माने यूरिन बाहरी आसीबनी तो पॉजिटिव टेस्ट सेटा बोनिस टेस्ट पॉजिटिव बोली कंसीडर करा हबो कॉमन कॉज होची वीक पेल्विक फ्लोर मसल जदि पेल्विक फ्लोर मसल वीक अछि मल्टीपेयरिटी माने चाइल्ड बर्थ बेसी मल्टीपल बेबी बार्थ देछि बा मेनोपोज हे जाइछि ओबेस्ट पेशेंट पेल्विक सर्जरी किछि हेछि ताले पेल्विक फ्लोर मसल वीक हे गले यूरिन कफिंग स्नीजिंग किछि फोर्सफुल माने फोर्स देले ही यूरिन बाहरी आसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होछि केगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथेन करबा पई टू स्ट्रेंथेन pelvic floor muscle weakness ପାଇଁ mainly stress incontinence होची ना तो strengthen pelvic floor ପାଇଁ kegel exercise first line treatment definitive surgical management होची mid urethral sling बा टीवीटी टीओटी और बर्क कल्प सस्पेंशन करा जाए ओटा सर्जिकल ट्रीटमेंट रे जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा Which of the following condition is an early symptom seen in myasthenia gravis? Myasthenia gravis कौन? को disease? Myasthenia gravis होची न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रो
माइस्थेनिया ग्राविस होची न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रो गोटे ऑटोइम्यून डिजीज। डिस्फाजिया हबो, टोसिस हबो, फैटिग इंप्रूविंग एट द एंड ऑफ द डे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फैटिग सबु बेले रहइबो, मसल फैटिग रहइबो जेहेतु न्यूरॉन आ मसल सिनाप्टिक क्लेफ्ट रहइला मझिरे न्यूरॉन आ मसल रा स्टिमुला न्यूरॉन रु किछि मसल को स्टिमुलस जाई पारुनी, एसिटाइल कोलाइन ब्लॉक हे जाउची। तो सेते बेले मेडिको सी नाइ, आंसर सी हबनी। यारली सिम्पटम्स रे एंड ऑफ द डे रे फैटिग इंप्रूव हबनी। फैटिग तो सबु बेले रहइबो, मसल वीकनेस तो सबु बेले, तो एंड ऑफ द डे संगे किछि लिंक नाही ना। आंसर कोन हबो? एटा होची न्यूरॉन आउ एटा होची सॉरी नर्व आउ एटा होची मसल। तो किछि ब्लॉक्ड रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर ही ब्लॉक हे जाय थाए। तो न्यूरॉन रो जो एसिटाइल कोलाइन आसीबा कथा सी आसीकी एठी रिसीव हेई पारेनी, रिसेप्टर ही ब्लॉक अछि। सॉरी बी रे कोन अछि? हाँ, ऑप्शन बी हबो टोसिस। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ऑटोइम्यून डिजीज ना, ऑटोइम्यून सेतिमाई निज देहर निज बॉडी रो एंटीबॉडी ही एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोची। तो नर्व एंडिंग रु जो एसिटाइल कोलाइन मसल को आसीबा कथा से पहुंची पारुनी। तो हमर फ्रीक्वेंटली सबु बेले आईलिड ही बेसी यूज होची। सबु बेले मसल स्केलेटल मसल भितरे केवल आईलिड माने केवल नहीं, बहुत सारा मसल कंटिन्यूअस वर्क करछन, किंतु आईलिड रे जेतु बेसी मूवमेंट होची एसिटाइल कोलाइन ताको बेसी दरकार हुए। तो एसिटाइल कोलाइन सेठी पहुंची न पारिले आईलिड ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हबो। तो अर्लीस्ट साइन रे टोसिस आसीबो। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट रे भी सेम, एसिटाइल कोलाइन पहुंची पारिबनी मसल रे, अर्लीस्ट साइन रे टोसिस आसीबो। माइस्थेनिया ग्राविस रे भी अर्लीस्ट साइन टोसिस आसीबो। मसल कंट्राक्शन भी रिड्यूस होची, सबु मस्कुलर एक्टिविटी कमी जाउची। एमति कि जदि डिजीज बढ़ी बढ़ी चलीला, क्रोनिक माने ऑटोइम्यून डिजीज ना बहुत दिन रही गला परे इंटरकोस्टल मसल्स भी अफेक्टेड हबो आ रेस्पिरेटरी पैटर्न भी अफेक्टेड है कि ब्रीदिंग पेशेंट रो ब्रीदिंग हबा भी स्टार्ट हबो। एग्जाम पॉइंट्स गुडा देखिबा। अर्लीस्ट सिम्पटम्स मु कहिली टोसिस काहे हबो, कारण आईलिड आमे कंटिन्यूअसली आईलिड मूवमेंट करछु, तो सेतिमै टोसिस हबो। मोस्ट कॉमन ऑक्युलर सिम्पटम्स होची टोसिस प्लस डबल विजन भी आसीबो, डिप्लोपिया। वीकनेस इंक्रीजेस विथ एक्टिविटी एंड इंप्रूव्स विथ रेस्ट। मसल रे जेतु एडिक्वेट अमाउंट रो एसिटाइल कोलाइन पहुंची पारुनी मसल फाइबर रे, सेतिपई एक्टिविटी कले मसल वीकनेस हबो आ रेस्ट नेले इंप्रूव हेबो। प्यूपिलर नॉर्मल इन माइस्थेनिया ग्राविस रे प्यूपिल्स नॉर्मल थाए। एंडोर्फोनियम टेस्ट बा ताको कुहा जाउची टेंसिलन टेस्ट। सेतरे कोन होए, एंडोर्फोनियम दिया जाए आउ जे कोन करे एसी माने एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को एंटीबॉडी को
इम्प्रूव हो जाए तो सेतेबेले जदि इम्प्रूव हो गला आमे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस पाइले जे माइस्थेनिया ग्राविस ही हेची एंडोर्फोनियम देला परे जदि मसल वीकनेस इम्प्रूव होची टोसिस भी इम्प्रूव होची ताले माइस्थेनिया ग्राविस हेची तो ताको टेंसिलन टेस्ट पॉजिटिव बोली कुहाबो फर्स्ट लाइन सिम्पटोमेटिक ड्रग होची पाइरिडोस्टिग्मिन बा नियोस्टिग्मिन भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रे नियोस्टिग्मिन बा पाइरिडोस्टिग्मिन जाउची माइस्थेनिया क्राइसिस होची क्राइसिस मु जोटा कहली अति एक्सेस बा सिवियर रे रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हेले पेशेंट रो ब्रीदिंग नबारे पेशेंट एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन अफेक्ट हबो अफेक्ट्स ब्रीदिंग इंटरकोस्टल कारण इंटरकोस्टल मसल्स वीकनेस हेजबो इंटरकोस्टल मसल वीकनेस पई माइस्थेनिया ग्राविस गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आसे सेतिरु क्वेश्चन सबु सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम रे सबु कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीची आगरु इंटरकोस्टल मसल वीकनेस पई रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हेले ब्रीदिंग अफेक्ट है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है पारे सेति पई प्रॉपर मैनेजमेंट जेमति कि इंटुबेशन पेशेंट को इंटुबेट करा जाए तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एट व्हाट एज डज ए नॉर्मल इन्फेंट टिपिकली डबल द बर्थ वेट को एज रे इन्फेंट रे बर्थ वेट डबल हुए 6 months 5 to 6 months रे हुए ऑप्शन रे 5 months अछि जदि इफ बार्थ वेट जन्म बेले अछि 3 केजी ताहले 5 month बेले को से 6 केजी हे जिवो आ 1 year बेले को ट्रिपल हे जिवो 9 केजी डबल हैला एटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेडियाट्रिक रो इजी क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो क्वेश्चन आसे प्राय जेमति कि डेवलपमेंटल ये गुडा को भी आसीबो सोशल स्माइल केबे कला बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स केबे ए सब जिंस गुडा को देखि कि जिवो बाथ वेट डबल हैला 5 months रे ट्रिपल हैला 12 months रे लेंथ केते बेले ये लेंथ भी एठी हां हेड सर्कमफेरेंस 1 year रे चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस अप्रोक्सीमेटली समान हुए इक्वल हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ 35 सेंटीमीटर अराउंड थाए आउ एंटीरियर हां ए दीटा क्वेश्चन रो तो क्वेश्चन आसे सबु एग्जाम रे आसीबो गोटे क्वेश्चन एंटीरियर फोंटानेल केते बेले क्लोज हुए और पोस्टीरियर फोंटानेल पोस्टीरियर क्लोजेस ईयरली आउ 12 to 18 months माने वर्षे रु 1.5 वर्ष भितरे एंटीरियर फोंटानेल क्लोज हुए आउ पोस्टीरियर फोंटानेल 6 to 8 weeks रे क्लोज हो जाए माने 1.5 मास रु 2 मास भितरे पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज हुए 1 year रु 1 वर्ष रु 1.5 वर्ष भितरे एंटीरियर फोंटानेल क्लोज हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रु क्वेश्चन देखि कि जिवो आसी पारे आज हमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करचे सीकेडी पेशेंट रो एरिथ्रोपोएटिन केमती अफेक्ट करूची एनीमिया केमती कॉज करूची माइस्थेनिया ग्राविस गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक सबले क्वेश्चन आसे आउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे बड़ चैप्टर चाइल्ड रो ग्रोथ को केते बेले कोन ग्रोथ होची डेवलपमेंटल कोन स्टेटस रहउची मेंटल रिटार्डेशन ए सब जिंस पढ़ी कि जीवो डेवलपमेंटल डिले एगुडा को पेडियाट्रिक रो आसे क्वेश्चन आउ काली मु आउ किछि मॉडरेट लेवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै के आसीबी थैंक यू।